मैं पहले पूरा प्रेजेंट कर दूंगी। ओके, लाइव तो हो चुका है। सो नमस्कार, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज के इस स्त्री रोग के विशेष लेक्चर सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ है डॉक्टर वैशाली वासुदा, जो कि जेएस आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज से है और स्त्री रोग डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत है। तो मैडम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं यहाँ पर धन्वंतरी वंदना को प्रस्तुत करती हूँ और उसके बाद हम लोग आज का ये विशेष सत्र जो है पीसीओडी को लेकर काफी दिनों से हम लोग, जैसे कि पीसीओडी एक बहुत ही सोशल अगर देखेंगे तो बहुत ही ज्यादा कम्युनिटी में ये स्प्रेड हो चुका है और बहुत सारे पेशेंट्स, यंग गर्ल्स हमारे पास पीसीओडी की समस्या लेकर आती है। तो इसी को लेकर मैडम का ये खास आज का सत्र है। बट सबसे पहले हम लोग भगवान धन्वंतरी की प्रार्थना करते हैं। शंखं चक्रं जलौकां दधतमृतं घटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मं स्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसनम् मौलिमम्बोजनेत्रं कालाम्बोद्योज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसश्च चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तव निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निलीलम्। सो वेलकम मैम, वेलकम वंस अगेन। जो कि आप बहुत ही एक्टिव रहती है और लाइक कई सारे लेक्चर्स आपने डिलीवर किए हैं, रिसर्च पेपर्स पब्लिश किए हैं और जेएस आयुर्वेद कॉलेज नडियाद गुजरात से आप हैं। तो आपका स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पर और हम लोग सभी आपको सुनना चाहते हैं और बाद में हमारा डिस्कशन भी होगा पीसीओडी को लेकर। सो मैम, यू कैन स्टार्ट। मैं आपको को होस्ट बना देती हूँ और आप आराम से स्टार्ट कर सकती हैं। या मैम, यू कैन शेयर योर पीपीटीज एंड यू मे स्टार्ट। Thank you so much. First of all, I would like to thank Ayush Darpan Foundation for organizing such series, and I also like to thank Vaidya Shilpa LMM for giving me this opportunity. So without wasting time, I will start my presentation. So first I will share my PPT. Just give me 1 minute. Okay. Yes. Is it visible, ma'am? Clear. Yes, yes. Continue, ma'am, please. Okay. So today's topic is Ayurveda management of PCOD, that is polycystic ovarian disease. So in this, first we will discuss modern aspect of PCOD, then Ayurveda understanding about PCOD and its management, and I will share some my clinical experience, especially a successful stories, so that you can understand very well like how Ayurveda will help, or Ayurveda help us to treat this condition. So what is PCOD or PCOS? So polycystic ovary syndrome, also known as Steen-Leventhal syndrome, it is a very common endocrine disorder in women of reproductive age with a reported prevalence ranging from 6 to 15%. So I would like to change here. Very recently, I read new edition of Barack and Novak. They mentioned that it has increased to 21% in India. And many patients have impaired insulin action, that is up to 75% of them are insulin resistance, hyperinsulinemia, and overweight or obesity.
And this appears to play a crucial role in pathogenesis of polycystic ovarian syndrome. There are two major PCOS phenotypes can be distinguished, the overweight or obese and the lean one. So most of the time in clinical practice, here the confusion arises. How to treat obese patient and how to treat lean one. This both the thing we will discuss in further PPTs. So their estimated prevalence is around 80 and around 20% respectively. So most of the cases we are come across in OPD, almost all are obese. So when we discuss about symptoms, so it includes whole body, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, और वी कैन से कि जब भी पेशेंट आता है पीसीओडी का ओपीडी में तो बेसिक कंप्लेन तो उसकी इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन या एमेनोरिया या तो एक्ने हर्स्यूटिज्म इतनी तो कॉमन रहेगी, लेकिन उसके साथ साथ इनमें से भी कुछ कंप्लेन्स रहती है, जैसे कि अगर हम शुरू करें माइंड से, देन डिप्रेशन, हाई स्ट्रेस, एंजाइटी, मूड स्विंग्स एंड इरिटेबिलिटी, then sleep problems like inability to sleep, sleep apnea, cyst, which includes ovarian cyst, benign cyst in breast and in other body part, and also follicular cyst. Digestive, if we discuss about digestive symptoms like bloating, constipation, uncontrolled hunger because of obesity, and insulin resistance, that is type 2 diabetes, sugar craving and food craving, weight problems, which includes excessive weight gain, hard to lose weight, belly fat, especially central obesity, and excessive weight loss. Then fatigue, hair loss, alopecia or hirsutism, especially over face or neck or arm and back region, and sometime in chest in between breast also they complain about hirsutism. Skin problems like cystic acne, dark spots on skin, especially acanthosis nigricans in folds of body like a nape of neck, axilla or pubic region. Then high cholesterol, high triglyceride and fatty liver are also associated with chronic PCOD. Then frequent, like if we discuss about fertility, then PCOD patient will always associated with frequent miscarriage, inability to conceive, infertility, low sexual drive. So जितने भी हम लोग infertility cases solve करते हैं, उसमें out of 10, 6 to 7 cases होते हैं जिनको PCOD होती है और उसकी वजह से frequent miscarriage and even preterm labor भी रहता है साथ में, जो हम आयुर्वेदा के थ्रू बहुत ही successfully treat कर पा रहे हैं. Then period problems, very common. First complaint जो रहेगी patient की वो period problems के बारे में ही होगी. First irregular periods like once in 2 months, 3 months or 4 months. Then dysmenorrhea, then spotting in between period and or heavy bleeding. Usually जो lean PCOS है उसमें heavy bleeding की complaint रहती है most commonly, and scanty menstrual flow. Like periods तो regular रहते हैं the frequency, but जो duration है and जो number of pad है वो reduce हो जाते हैं. Now, criteria for diagnosis of polycystic ovary syndrome includes especially ESHRE or ASRM we are using commonly. So clinical or biochemical signs of hyperandrogenism, menstrual dysfunction, oligo or anovulation, ovarian dysfunction, and polycystic ovaries. Through sonography, we can diagnose this polycystic ovaries. Why anovulation occur? That is because of low follicle stimulating hormone level, hyperprolactinemia in 20% of cases we have found, and there may be mild elevation of prolactin level due to increased pulsatility of GnRH, and androgen excess from sources like adrenal, ovary, and also because of hyperinsulinemia, because of metabolic alteration, it does the stimulation of theca cells to produce more and more androgen. But here aromatization is absent, that's why free androgen will float in system. Then obesity and insulin resistance, that is apart from excess production of androgen, obesity is also associated with reduced SHBG, that is sex hormone binding globulin. So what happened?
because of that, the androgen aromatization will not occur, and the estrone will not form, or peripheral estrone will float freely into the system, and which in turn leads to irregularity. And hypothalamic pituitary compartment in PCOS, which include increased pulse frequency of GnRH, and it leads to increasing in luteinizing hormone. So investigation to diagnose PCOS, sonography is gold standard one. Through sonography, very easily we can diagnose this condition. We don't need any other investigation to diagnose polycystic ovary. So what we should see in this, so size of ovary, if it increases more than 10 cubic per mm, increased number of follicle, especially more than 12, or multiple follicles or cyst of 2 to 9 mm in size. And laparoscopy is also for diagnosis, and mainly laparoscopy we are You are muted, ma'am. Voice is not there. Am I audible now? Yes, yes. So testosterone will increase more than 150 ng per dl, and dihydroxyepiandrosterone also marginally elevated. So why hyperandrogenemia occur? Because there is a lack of aromatization. Aromatization means conversion of androgen into the types of estrogen, and this is mainly happen at theca externa and theca interna cells of matured follicles. But here there is no proper follicular growth, and there is no ovulation. So that's why this aromatization process will not occur, and androgen will increase in its quantity, and in turn it leads to acne and excess of hair, change in voice, change in skin texture, and so on. Next is hyperinsulinemia, raised fasting insulin level more than 25. Here, fasting insulin level I'm speaking about. So that is more than 25, and fasting glucose or insulin ratio will be less than 4.5. And levels of serum insulin response will more than 300, and at 2 hour post glucose load, that is up to 75 gram we are giving orally to the patient, which suggests severe IR. And hyperlipidemia, hyperprolactinemia, hypersecretion of LH, these can be diagnosed through investigations like lipid profile and serum prolactin level and serum LH level. Then low serum SHBG, then raised level of estrone, estradiol. Here, estrogen is divided into, or estrogen is having 3 types of its level, like estradiol, estrone, and estrogen. So here, estrone is the least quality type of estrogen, and it will be elevated because of peripheral fat accumulation. And estrone is of no use because it cannot help in maintenance of HPO axis. In turn, the raised level of estrone, what it will does, it leads to endometrial hyperplasia. So that is not of no use for body or for HPO axis. Then low FSH. So because of low FSH, follicle stimulating hormone, the further growth of follicles will not occur. And low serum progesterone, that is again because of lack of follicular growth. So these biochemical abnormalities we may find in PCOS. So what are the long-term consequences? So patients suffering from PCOS includes the excess androgen, mainly androstenedione, either from the ovaries or adrenals, are peripherally aromatized to estrone. So as I discussed just now, that estrone variety of estrogen will increase more and more, and there is a concomitant diminished
SHBG, that is sex hormone binding globulin. So here there is a lack of sex hormone binding globulin, so estrone will increase and float freely into the system. And what it does, it leads to hyperestrogenic state, and because of that, endometrial hyperplasia. That is just we are considering as pre-neoplastic or pre-cancerous stage. But it is a very long-term consequences, and in all patients this may not occur, but there are chance. So possible late co-sequels are like obese women whose BMI is more than 30 are at risk of developing diabetes mellitus due to insulin resistance, risk of developing endometrial carcinoma due to persistently elevated level of estrogens, especially estrone, and risk of hypertension and cardiovascular disease as because of dyslipidemia, where reduced high density and increased triglyceride and low density lipid. And it is the most common metabolic abnormality in women with PCOS. So what Ayurveda says about polycystic ovarian syndrome? Ayurveda does not speak in terms of hormones. It has its own unique language and terms. Hormones are considered as fire element in tissues. The action of hormone expresses the nature of pitta, the energy responsible for transformation. All stages of female reproductive process are a result of interplay of hormones. So here this includes estrogen, progesterone, LH, FSH, and all. So the fact behind the alteration of each stage is due to pitta replicated in the effect of the hormones on the various stages of ovarian and menstrual cycle. If pitta predominates, it manifests as hair loss, acne, painful menses, clots, and heart problems. Kapha is heavy and cool qualities. Kapha's heavy and cool qualities nourishes the development of the tissue that form and support the reproductive system, including the nurturing energy, supporting growth of follicle during the ovarian cycle. Kapha predominance manifests as increased weight, subfertility, hirsutism, and diabetic tendencies. Vata is reliable for affecting the movement of the follicle during ovarian cycle, the breakdown of ovary wall for releasing matured ovum, the movement of the fimbriae, which directs the ovum into the fallopian tube, and the movement of the ovum near the uterus. The predominance of Vata is manifested as painful menses, scanty or less menstrual blood, and severe menstrual irregularity. So this is how all three doshas are involved in female reproductive system. Now, Ayurveda describes PCOS to have an equal involvement of dosha, dhatu, and updhatu. Anartava, which we can correlate with the amenorrhea, that is absence of menstruation. Yoni vyapats like arajaska, where oligomenorrhea due to vitiation of vata dosha. Lohitakshaya yoni vyapat, where oligomenorrhea due to vitiation of vata and pitta dosha. And vandhya, infertility, which is late co-sequel of PCOS. Then pushpagni jataharini, that is anovulatory menstruation without any cause. Then abhijatva, anovulation, then rajodusti and asta artavadusti, the diseases related to menstrual flow, all are because of vitiation of vata dosha. And all these conditions we can correlate with the PCOS. Now, how to understand the pathology of PCOS in Ayurveda? Vata and Kapha dosha as well as Visham Ahar and Vihar leads to reduced digestive fire, that is Agni. It also includes Dhatvagni and Upadhatvagni and causes production of Ama. This AMA production causes improper enzymic reaction leading to incomplete metabolism and hormonal imbalance. This hormonal imbalance causes hyperinsulinemia and hyperandrogenism, ultimately leading to anovulation and amenorrhea or oligomenorrhea and ovarian abnormalities like polycystic ovaries. And further, chronically this PCOS will induce or will create symptoms as we discussed in second slide. Then how to manage this condition? So first of all, as we all know that Ayurveda
acts first preventive and then curative. So for preventive aspect, early recognition of PCOS in adolescence is very, very important, so that we can reduce the symptom up to like significant level, or we can manage this condition at least up to achievement of goal. So many a time OPD में हमें पेशेंट आते हैं दिखाने के लिए, उनका एक ही गोल होता है कि आफ्टर मैरिज फर्टिलिटी, चाहे पीसीओडी हो या कोई भी गायनेक रिलेटेड प्रॉब्लम हो, उनको बस यही चाहिए साइकोलॉजिकली कि लाइक मैरिज हो गए हैं एंड जो भी उनकी फैमिली प्लानिंग है 1 किड और 2 किड वो अचीव हो जाए, बाद में चाहे भले ही कंडीशन कंटिन्यू रहे. सो पीसीओएस पेशेंट में भी यही हमें मिलता है कि मेनली इनफर्टाइल पेशेंट आते हैं, हम लोग इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, उसे पीसीओएस डायग्नोस होता है, बट उनका गोल फर्टिलिटी की ओर होता है. तो हमें मैनेजमेंट भी ऐसे करना है कि पीसीओडी भी ट्रीट हो सके और साथ ही साथ इवन फर्टिलिटी भी अचीव हो सके. सो फॉर दैट अगर हमें अर्ली डायग्नोसिस होता है पीसीओडी का, सो उसी टाइम से रेगुलर मेडिकेशंस, शोधन चिकित्सा, वो सबसे में एटलीस्ट पेशेंट के एम एंड ऑब्जेक्टिव अचीव करा सकते हैं. So the metabolic and hormonal profile should be assessed in first degree male relative of PCOS woman. This is a new study that even males like genetically, we all know that in PCOD there are some cases कि जिसमें genetics भी involve होते हैं, means mother या sister या किसी में से अगर PCOD या menstrual abnormality होती है तो even particular patient में भी आती है. But not only female side, इवन फादर को कोई एंड्रोजन रिलेटेड एबनॉर्मलिटी है, लाइक अर्ली बाल्डनेस फॉर एग्जांपल, तो उस पर्टिकुलर मेल के गर्ल चाइल्ड में उसकी प्यूबर्टी में पीसीओएस होने के चांस बढ़ जाते हैं. दैट्स व्हाई द मेटाबॉलिक एंड हार्मोनल प्रोफाइल शुड बी असेस्ड इन फर्स्ट डिग्री मेल रिलेटिव ऑफ पीसीओएस वुमन, एंड दिस मे हेल्प टू प्रिवेंट द रिस्क ऑफ टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस एंड कार्डियोवैस्कुलर डिसीज लेटर इन लाइफ. Then curative aspect, first of all निदान परिवर्जन. So बहुत सारे निदान है पीसीओडी के, सिर्फ डाइट, ओनली डाइट हम नहीं कह सकते, बीज दुष्टि भी इसमें आ जाती है, हेरिडेटरी भी इसमें आ सकती है. देन कई बार ऐसा भी है कि जो पेशेंट को जो बहुत सारे लाइक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करने वाले जो पेशेंट्स हैं उनको भी पीसीओडी डेवलप हो सकता है. देन सेडेंटरी लाइफस्टाइल, स्ट्रेस, yes, we should not forget psychological factor, over stress, overthinking, उसकी वजह से भी ग्रेजुअली हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी एक्सिस जो है वो इम्पेयर्ड होता है, एंड अल्टीमेटली एचपीओ एक्सिस में हार्मोनल इम्बैलेंस होने की वजह से पीसीओडी डेवलप होता है. सो निदान परिवर्जन, देन शोधन शमन, पथ्य अपथ्य आहार विहार, एंड एट लास्ट योगासनास. In Panchkarma, usually here in PD Patel Ayurveda Hospital in Nadiyad, we are advising complete Panchkarma for PCOS patient like Vaman, Virechan and Basti. In Basti, especially alternate Basti like Lekhan or Niru Basti and Anuvasan or Matra Basti, depends on patient. So gynecological disorder do not occur without vitiation of Vata. आप अगर पूरी जो टेक्स्ट बुक है प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग की पूरी टेक्स्ट बुक पढ़ने के बाद ये कंक्लूजन एक ही मिलेगा आपको, चाहे वो ऑब्स्टेटिक्स हो या गायनेकोलॉजी हो, कोई भी एब्नॉर्मलिटी हो या कोई भी चीज को नॉर्मल रखना हो, तो वाता इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. सो thus first of all vata should be normalized. Maharshi Charak says that in all gynecological disorder, Vaman, Virechan, etc., all 5 purifying measures should be used for proper after proper ovulation, that is Snehan and Svedan procedure. And before that, before Snehan and Svedan, we should advise Deepan Pajan. So for main aim of Deepan Pajan to increase Jatragni and Dhatvagni, or to normalize the Jatragni or Dhatvagni as well as Artavagni, that is Upadhatvagni. And after that, we can advise Snehapan and then Sarvangabhyang and Svedan. Udvartana is also have its additional role. So why? Because Udvartana is helpful in pacifying kapha and reducing meda. Here we usually use churna of Trifla, Kola and Yava. There are many options for Udvartana also. Any you can use.
So weight reduction can be achieved. So this will help us to reduce peripheral fat very fast compared to that of any other method. So Panchkarma includes all Vaman, Virechan, Anuasan and Nirubasti. This will help in cleansing the channel from upward and downward direction. And after this, if we advise any medication to the patient, its absorption and the use of medicine in body will improve compared to that of patient who have not undergone Shodhan property. And Nasya Karma. So Nasya Karma, how it will help? So through nose, whatever medicine or whatever through oil or churna we are administering into the patient's body, it will act upon its prabhav. So through cribriform plate, the effect of medicine will reach up to the hypothalamo-pituitary axis. Or through Ayurveda, we can say that Nasahi Shirasodvara. And by this, we can stimulate the suppressed effect of hypothalamus and pituitary, and by which we can achieve the normal hormonal function. Uttar Basti, why I have written here, Uttar Basti directly will not help in PCOD, but it will help to achieve other goal. For example, if patient come with PCOD also and if she wants to conceive also, so in such patient we can advise Uttar Basti to maintain or to improve the endometrial thickness or endometrial wall, or to nourish the endometrial wall. But direct effect of Uttar Basti on polycystic ovary is not yet defined very well. There are many practitioners who are using Uttar Basti for PCOD, but exact mode of action is not yet confined. Now, Aushadhi. So after Panchkarma, there are n number of Aushadhis. Here, whatever Aushadhis I have mentioned, what I am practicing in my practice. There are many medication, there are so many yogas, different practitioners are using, and they are getting results as per their yukti. So Kashaya, Vati, Gruta, Churna and Asa Varishtha, these are the preparation we are using here. So how to select a drug? First of all, this depends on patient's prakruti, patient willingness. कई बार पेशेंट ऐसे होता है कि जो कषाय नहीं ले सकते, घी नहीं ले सकते, वटी, इवन कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको वटी स्वॉलो करने में भी प्रॉब्लम होती है, तो ऐसे पेशेंट को कषाय या घृत से वो इजीली कंज्यूम कर सकते हैं. तो डिपेंडिंग अपॉन दैट, डिपेंडिंग ऑन प्रकृति ऑफ पेशेंट, लाइक फॉर एग्जांपल अगर पेशेंट लीन है और अगर उसे पीसीओडी है तो उसमें यूजुअली घृत प्रिपरेशन एंड आसा वरिष्ठ प्रिपरेशन हम यूज कर सकते हैं. सो कषाय इंक्लूड्स वरुणादि कषाय, पुनर्नवादि क्वाथ, त्रिफला, शिग्रु, दशमूलादि एंड भद्रदारुवादि क्वाथ. So all these kashayas are having Vatanulomak and Kafahara property and also Lekhan property. Then Vati, this includes Gomutra, Haritaki, Raj Pravartini Vati, Kanya Lohadi Vati. Raj Pravartini Vati and Kanya Lohadi Vati helps in Kastartau or pain during menstruation, or it improve the or it balances the hormonal level. Then Yogaraj Guggal, Kanchnar Guggal, Arogya Vardhini Vati, Chandra Prabhavati, Medohar Guggal, Brahmi Vati. All these are Vatis acts at different level. Like for example, if you also want to target metabolism of patient, especially in chronic PCOS case, more than 5 year, 10 year, like that, then in that Arogya Vardhini Vati you can advise. Obese patient, where Gomutra, Haritaki or Medohar Guggal also we can advise. Patient with lots of stress and psychological factor, there we can advise Brahmi Vati. Patient also having infertility problem, in that Lashunadi Vati also we can advise. Then Gruta, Sukumar Grut, Fal Grut, Mahakalyana Grut, Shatavari Grut, we can advise. And in Taila, Shatpushpa Taila. This Shatpushpa Taila we are using in PCOS as a Abhyang also, for Snehpan also, for Nasya Karma also, and for Shamana Sneha at home also. And same for Lashun Taila and Tila Taila. Then Churna, Trivrut and Trifla Churna. Based on Kala, we are using this Trivrut and Trifla combination. So usually in Sharad Rutu and Grishma Rutu, we are not using this combination.
then Shatavari and Yashtimadu. So usually these two drugs are having opposite quality to that of Kapha and Vata, but especially when there is lean patient. So in order to improve the strength in patient or to avoid more dhatu ksharana through kashaya or lekhan aushadhi, along with that we are also advising Shatavari and Yashtimadu Churna and Shatapushpa Trikatu, Gokshura, Patha and Aragvata. Gokshura is also having property like diuretic property, which means any extra accumulation of fluid in body. Even Varunadi and Punarnavadi act at same level. So any extra accumulation of fluid in body, there you can select this type of drug like Gokshur, Varunadi and Punarnavadi. So in PCOD also, there is accumulation of fluid in ovaries, both the ovaries, and also there is obesity. So these drugs we can select. Then Patha and Aragvada, both are explained in Chikitsa of Kapha Vataj Artaudushti. And we are also correlating PCOD with Kapha and Kapha Vataj Artaudushti. That's why we are also using this Patha and Aragvan. And in Asavarishta, Ashokarishta and Kumari Asav are the best choice. These are some formulations available in market on which there is a clinical trial or animal study was done, like Stanya Shodhan Gana, Gynocare tablet, then Gyneton Fort capsule, Eucare syrup or Eucare Fort, Kanchnar Google, Shilajit Rasayan, which is herbo-mineral formulation, and Mehan. So these are certain examples of marketly available formulation, which is effective in PCOS. Now, next Pathya, especially in case of Vata Kapha disorders or patient with Prakruti of Vata and Kapha or only Kapha, there you can advise Raktashali, Shastikashali, and in Shukadhanya, Yava, we can advise instead of wheat or rice, you can advise Yava and brown rice. Then green gram Mudga, that is especially Harita Mudga, what we are using commonly. Then if when come to milk, Dugdha, then only cow or Aja milk or goat milk we can advise. So वो usually धारोश न होना चाहिए, means hot in taste, like tolerable, or Shruta Sita, or keep in Tamra, Rajat or Kamsya Patra. So here the quality of Patra will add it to milk and through which we can pacify Kapha and Vata. Then for Takra also, the Takra made up of Dugdha of Gavya and Aja or cow or goat. Same for Dadi, Takra and Grita. So for Dadi, you should not advise plain milk to PCOS patient, plain curd to PCOS patient. It should be Lavan Yukta or Dadi Mastu you can advise. Then for Takra, 1/4 or 1/2 Udashvita, that is 1/4 or 1/2 Jala in Dadi should mix and should prepare Takra, or Mathita, means after churning, cream should be removed and only Takra should be advised, or Sendava or Trikatu or Jiraka and Sendava Yukta Takra we can advise. Plain we cannot advise in PCOS patient. And for Gruta also, Purana Gruta is best. And for Taila, for day-to-day in food or in diet, we can advise Tila Taila instead of any other oil. Then, usually, practically, we are not advising any Madhya Varga, but as a medicine, we can advise this Vivitaka Sura, Draksha Sura, or Guda Sava, Arishta, Dhanyamla, or Kanji, or Abhay Arishta we can advise. But for PCOS patient, instead of advising other Sura Asav, it's better to use Kumari Asav or Ashoka Rist. Then Jala, this is very important aspect. कई बार पीसीओडी के पेशेंट्स पहले से ही हमें ये इन्फॉर्म करते हैं कि वो लोग रोज मॉर्निंग में एवरी डे वार्म वाटर के साथ शहद या नींबू डाल के पीते हैं. तो जब भी हम उनको प्रोसीजर पूछते हैं तो बस वो पानी को सिर्फ गर्म करते हैं
और ज्यादा से ज्यादा एक बार उबाल आने देते हैं और फिर ठंडा करके पीते हैं, बट दैट इज नॉट द आइडियल मेथड। जब भी किसी को कफज डिसऑर्डर होता है या कफ प्रकृति हो या किसी को मेद रिड्यूस करना है बॉडी में से, तो उनको पानी को एटलीस्ट उतना बॉईल करना है जब तक वो 1/4 रिड्यूस ना हो जाए, 1/4 तक रिड्यूस ना हो जाए। मीन्स अगर आपने 1 लीटर पानी लिया है तो वो 250 ml जितना बचे तब तक उसे बॉईल करते रहना है। वैसा पानी अगर पेशेंट पिएंगे तो उनको कफ या तो मेद जो है वो रिड्यूस होने में हेल्प मिलेगी, अदरवाइज इट इज जस्ट सेम लाइक नॉर्मल वाटर। We can also advise water like stone heated in sun and then dipped in water. So these are some classical methods. Practically, patient may not follow all these methods, but at least these method patient can follow. Like they should boil water till it reduces to 1/4. And tandulodaka. So tandulodaka means the rice water. Rice water means before boiling the rice. So usually before preparing rice, we wash the rice. Initially, the dirt and all will come out. Next, starch. And the third time when we wash rice, that particular water we can advise to patient. So Tandulodaka is having Kaphahar property. That's why we are advising. Next is yoga in PCOS. So yoga is a complete prescription for healthy body and mind, which can destroy the root cause of PCOS, that is obesity and stress. Holding weight-bearing poses builds muscle. In turn, increase muscle mass, help to combat insulin resistance, which is one of the keys to PCOS management. An active yoga practice increases heart rate, providing a cardiovascular workout and leading to weight loss. Asanas and pranayam promote hormonal balance and deep relaxation, helping to bring the adrenal and cortisol level of stress out and PCOS mind and bodies. Yoga philosophy and Ayurveda describes certain poses as a stimulating energy system within the body that may be stagnant in women with PCOS as a means to bring the body into balance. So yoga जो है वो पेशेंट को weight loss करने में and particular portion involve pelvic region involve होने की वजह से और mind जो प्राणायाम की वजह से जो mind involvement होता है उससे वो HPO axis balance करने में helpful होता है. So there are a few asanas for PCOS like Baddha Konasana, that is butterfly pose, Supta Baddha Konasana, reclined bound angle, Bhadra Vajrasana, then Chakki Chalasana, that is meal churning pose, Savasana, corpse pose, Padma Sandhana, and a few rounds of Surya Namaskar. So here, first is Baddha Konasana, butterfly pose. Only Yogasana will not help to manage PCOD. PCOD is a syndrome. It's a combination of many disorders in body. So we need here holistic approach like Panchakarma, oral medication, psychological treatment through Brahmi, Shank, Pushpi, etc. and Yogasana and exercise for weight loss. So you can see this posture in picture. So in which sit up tall with long spine as you draw your feet in as close to your body as it's comfortable. So by seeing picture easily you can make out how one should perform this. Next is Supta Baddha Konasana, that is reclined bound angle. So up to what time we can maintain this posture? So this depends on patient. There is no certain time that for 5 minutes, 2 minutes or 1 minute. As much as patient can hold comfortably, that much time they can be in that posture, then they can release. And how many rounds? For that also it depends on patient. Initially they should start with very minimal number of rounds and then gradually they can increase. So Bhadra Vajrasana, you can see in this picture. Chakki Chalasana. This also you can observe in this picture how to do this asana and how it will involve the pelvic muscles and internal pelvic organ and also abdominal muscles so that central obesity can be reduced. And Savasana, this is usually by Savasana because after a few asanas we usually give a relaxation pose so that body can relax and mind can be relaxed.
Then Padmasandhana, this will help in reduction of fat, central obesity, and this also include the pelvic muscle strengthening. Then these are few round of Surya Namaskar. Surya Namaskar is very famous and very common yogasan. If मान लो कि पेशेंट को कोई भी आसन आप एडवाइस नहीं कर सकते, लाइक मीन्स कि पेशेंट को पता नहीं है या नॉलेज नहीं है, बट सूर्य नमस्कार एक ऐसा है जिसमें पूरी बॉडी इन्वॉल्वमेंट होता है इंक्लूडिंग माइंड. सो ओनली सूर्य नमस्कार ऑल्सो यू कैन एडवाइस स्टार्टिंग विथ 2 राउंड अप टू they can increase to their capacity. So here I have shared few cases. So case 1, unmarried patient, 20-year female with history of irregular menstruation once per 4 months since menarche. So in her USG shows PCO. There was no signs of hyperandrogenism. BMI was 21. So for her, I gave treatment Falgrut 10 ml OD before food. Raj Pravartini Vati 3 tablets twice a day before food. See, Raj Pravartini Vati depends on size of tablet. So you can advise size of 125 milligram tablet twice a day, 2 tablets twice a day. Then Chitrakadi Vati 2 tablets for 6 months. So after 6 months, she attained her regular menstruation and still treatment is continued. Now next plan is gradually we will reduce this treatment and will observe that without treatment whether her periods are regular or not, or whether her ovaries can stay healthy for longer period or not. Then this is case 2, unmarried patient, 22-year female with history of irregular menstruation once per 2 months since 3 to 4 years. USG shows PCO, BMI 26, obesity 1+. For her, I advise Vaman Karma, then Falgrut 2 teaspoon or 10 ml OD, Varunadikvat 10 ml thrice a day, Raj Pravartini Vati 3 tablets twice a day, Kanchana Google 3 tablets 4 times a day. And result was patient was treated. Since 6 months, patient is having normal menstruation and no evidence of PCO in USG. Since 6 months means now almost, actually I supposed to present this 3 months back. So now I can say since 9 months patient is having normal menstruation and no evidence of PCO in USG. Case 3, married 28-year female, history of irregular menstruation once per 1.5 to 2 months since 3 years, and she was unable to get conceived since 2 years. Her USG shows PCO, BMI was 28, no hyperandrogenism, obesity was 1+, and obstetric history was she already had 1 kid. She was trying for second one. So I advised her Vaman, Virechan and Basti. Then after this treatment, Panchkarma therapy, Falgrut 2 teaspoon or 10 ml OD, Shatavari Churna and Gokshur Churna 5 gram BD with milk for 3 months. Then after that she conceived at 3rd month and delivered healthy male baby of 2.8 kg full-term normal delivery last December 2021. Case 4, married 26-year female with history of irregular menstruation once per 2 to 3 months since 4 years. She was also unable to conceive since 3 years. Here, the difference is here by mistakenly it is L1, but she had 2 abortions and no child. And her BMI was 25. I advise her saying Vaman, Virechan, Basti, Falgrut, Shatavari and Gokshur Churna with milk. She conceived. And right now, this patient also, she delivered healthy male baby through LSCS. Thank you so much for listening me. Thank you, ma'am. Thank you very much. Thank you. Now I request our Vaidyas, doctors to post questions and you can directly ask. Unmute करके आप बोल सकते हैं. तो मेरी तरफ से एक सवाल ये है कि हम लाइक लीन पीसीओडी में और ओबेस पीसीओडी में कैसे प्लान आउट करें? हाँ मैम, यूजुअली क्या होता है ओबेस पीसीओडी में
हम लोग कफ एंड लेखन लाइन ऑफ ट्रीटमेंट करते हैं। हम्म, और लीन पीसीओडी में हमारा जो मेन टारगेट है वो वातानुलोमन एंड हॉर्मोन्स को रेगुलर करने के साइड पे रहता है, और जस्ट टू रिमूव एक्सेस ऑफ वाटर फ्रॉम ओवरी. So for that, you can advise Shatavari and Gokshur Churna combination. So both are having diuretic property. So diuretic property means not only related to urine, but it also removes extra fluid collection from body. And as Shatavari contains beta-cetosterol, which also helps in synthesis of steroidal hormones in body like estrogen, progesterone, LH, and FSH. And along with that, Falgruth you can advise. But we cannot advise more of Lekhan line of treatment. Yeah, in lean PCOD, because here is Dhatu Kshay, na? In lean PCOD, mainly Dhatu Kshay is there. Yes, that's right. And mainly most of the cases आपने भी शायद एक्सपीरियंस किया होगा, मैंने तो यूजुअली बहुत सारे लीन पीसीओडी में एक्सेसिव ब्लीडिंग होता है पीसीओडी में। जितने मेरे ओपीडी में आते हैं पेशेंट्स, तो होते हैं कई सारे ऐसे जिनको लाइक एमेनोरिया या ओलिगो होता है, बट कई सारे क्या होता है कि ओलिगो या एमेनोरिया तो रहता है 4 या 5 मंथ में एक बार मेंसेस आता है, बट बहुत ही एक्सेसिव होता है। तो इसलिए ऐसे केस में हमें शोधन भी बहुत ही प्लांट वे में करना पड़ता है। उनको हम लेखन बस्ती या ज्यादा नीरू बस्ती भी एडवाइस नहीं कर सकते, मात्रा बस्ती दे सकते हैं, देन विरेचन, वमन विरेचन दे सकते हैं, वो कोई हल्का सा। यस। और मैम जैसे कि कई बार ऐसे होता है ना कि पीसीओडी के साथ साथ 3-3, 4-4 महीने पीरियड्स नहीं आते हैं, तो वहां पे हम लोग इंड्यूस करने के लिए मेंस्ट्रुएशन क्या यूज करें? क्योंकि रजोप्रवर्तनी वटी का कई बार ऐसे होता है ना, इफेक्ट नहीं आता है, और फिर रजोप्रवर्तनी वटी के साथ ऐसा है कि कई बार थोड़ा सा वात दोष या रुक्षता होती है ज्यादा शरीर में, और पेशेंट भी कंटाला आता है ना, पेशेंट को भी कितना मेडिसिन खाए इंड्यूस करने के लिए। सो इंस्टेंटली हम लोग क्या कर सकते हैं? तो मैम इंस्टेंटली इसमें क्या है कि डिपेंड करता है कि उनकी जो एचपीओ एक्सिस या ओवेरियन साइकिल या एंडोमेट्रियल साइकिल कहाँ तक पहुंची है। नॉर्मल मेंस्ट्रुअल फिजियोलॉजी क्या होती है कि जब वॉल प्रिपेयर होती है, ओव्यूलेशन होता है बट कंसेप्शन नहीं होता, तो सारे हार्मोन फॉल हो जाते हैं एंड उसकी वजह से जो वॉल है जो शेड हो जाती है। बट पीसीओडी के अंदर ना तो ओव्यूलेशन होता है, ना तो वॉल प्रॉपर फॉर्म होती है, और ना ही हॉर्मोन्स होते हैं। ये सारी प्रोसेस बिल्कुल स्लो होती है। तो जब भी हम ये सडनली इंड्यूस करते हैं तो वो हमें तुरंत रिजल्ट वैसे भी कभी नहीं मिलेगा। कुछ केसेस में हमें रिजल्ट मिलता है क्योंकि वहां पे सिर्फ एक ही पॉइंट बाकी होता है, दैट इज फॉल इन हार्मोनल लेवल। बाकी जितने केसेस ऐसे है कि जिसमें अभी वॉल भी प्रॉपरली फॉर्म नहीं हुई है, पॉलीफिलोजेनेसिस भी अभी नहीं फिर हुआ, हम लोगों को गृह नहीं करना पड़ेगा वहां पे ना, थोड़ा सा वॉल तैयार हो इसके लिए। हाँ, तो उसमें सडन हमें तुरंत ही रिजल्ट नहीं मिलेगा उसमें जो हम एक्सपेक्ट करते हैं। क्योंकि हमारे साथ भी ऐसा प्रैक्टिस में होता है कि कुछ पेशेंट को हम लोग यहाँ पे यूजुअली इंडक्ट करने के लिए नस्य एडवाइस करते हैं, शतपुष्पा तेल का, या तो प्रथमन नस्य भी देते हैं कई बार, डिपेंड करता है पेशेंट की स्टेमिना कैसी है। प्रथमन नस्य किस चीज का देंगे, किस ऑयल का या वचा चूर्ण का? प्रथमन हम पाउडर से देते हैं, त्रिकटु जो क्लासिकल मेथड है वो हम फॉलो नहीं करते। हम लोग क्या करते हैं, पोटली जैसा, मतलब जो गॉसपीस रहता है में उसके 2-3 लेयर करके उसमें फाइन पाउडर त्रिकटु का बना के पोटली बना देते हैं, और फिर पेशेंट को एकदम जोर से उसे इनहेल करने के लिए बोलते हैं, लाइक स्मेल करने के लिए। तो ऐसा करने से कुछ पोर्शन जो है वो पाउडर का वो थोड़ा बहुत अंदर जाता है, पेशेंट को थोड़ा बहुत स्नीजिंग भी होता है, और ये मेथड एक फॉलो करते हैं। देन शतपुष्पा तेल नस्य एंड ओरली रज प्रवर्तिनी वटी, और उष्णता बढ़ाने के लिए चित्रकादि वटी भी हम कभी कभी एडवाइस करते हैं। उष्ण गुण चाहिए, अग्नि गुण को बढ़ाना होगा। हाँ, तो इससे क्या है कि कई सारे पेशेंट्स में हमें तीसरे चौथे दिन मेंस्ट्रुएशन जो है वो अचीव हो जाता है, और कई सारे पेशेंट्स में प्रोलॉन्ग यूज करने पर भी हमें रिजल्ट नहीं मिलता है। सो उसका ये कंक्लूजन होता है कि जिनको रिजल्ट मिलता है एटलीस्ट उनमें सिस्टम साइकिल में कुछ तो मूवमेंट हो रहा है, मतलब वॉल प्रिपेयर हो रही है या हॉर्मोन्स बन रहे हैं। तो ऐसे इंडक्ट करने से, ऐसे स्टिमुलेंट इफ यूज करने से हम मेंस्ट्रुएशन अचीव कर सकते हैं। बट जो केस में अचीवमेंट नहीं मिलता
वैसे केसेस में हमें पंचकर्म करके फिर उनकी प्रकृति के अकॉर्डिंग शमन औषधि देके सिर्फ वेट एंड वॉच ही करना होता है। अच्छा, वो टाइम के भी आएगा ऐसे, लाइक मेडिसिन का ज्यादा रोल नहीं रह पाता है वहाँ। ओके मैम। Another case is there. Some Dr. Sunil is asking that 16-year girl within 6th month and 9 kg weight gain. So क्या कर सकते हैं? 6 month 16-year girl with 6 month and 9 in 6th month. 9 kg weight gain. USG shows PCOD hormones are normal. तो ये 16 ईयर गर्ल है, तो अभी उतना हम जल्दी नहीं करेंगे क्योंकि वेट गेन है, तो इसमें वमन कर्म बहुत ही अच्छे से इफेक्ट करेगा। बट एज ये 16 ईयर गर्ल है तो उसमें वमन में क्या है कि पेशेंट उतना कोऑपरेट नहीं करता, डिपेंड ऑन पेशेंट। अगर ये पेशेंट अच्छे से कोऑपरेट कर रही है तो डेफिनेटली आप वमन विरेचन और बस्ती प्लान कर सकते हैं, जो हम बाल रोग के में जो हम डोसेज डिसाइड करते हैं फॉर पीडियाट्रिक उससे। बट मेरा एक्सपीरियंस तो यही कहता है कि 20 ईयर के नीचे के गर्ल्स में मुझे पंचकर्म में उतना सपोर्ट नहीं मिला है, बिकॉज ऑफ वो थोड़े छोटे होते हैं, मैच्योर उनका माइंड रहता है, तो वो नहीं कोप अप कर पाते। तो इसमें आप अभी उनकी जो पूरी जो प्रोफाइल है, हार्मोन्स तो आपने करवा लिए हैं, वो नॉर्मल है, पीसीओडी ही है सिर्फ। तो इसमें वरुण आदि एंड पुनर्नवा आदि क्वाथ का कॉम्बिनेशन दे सकते हो। अगर पेशेंट क्वाथ नहीं ले पाता तो आप उसे कांचनार एंड त्रिफला गूगल, जो मैंने अभी मेंशन नहीं किया है बट वो मैंने पिछले 1 साल में ऑब्जर्व किया है कि त्रिफला गूगल के भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स है पीसीओडी में। सो त्रिफला गूगल आप दे सकते हो इस केस में। एंड हार्मोन बैलेंस के लिए फलग्रुत जो है वो बेस्ट मेडिसिन है। फलग्रुत के कॉम्बिनेशंस में भी त्रिफला रहता है, शतावरी है, तो जिसकी वजह से हार्मोन्स जो है वो नॉर्मल, उसको HPO एक्सिस नॉर्मल करने में वो हेल्पफुल रहेगा। एज ये गुप्त कल्पना है तो यूजुअली पेशेंट सामने से ये भी पूछ सकते हैं कि वेट गेन बढ़ सकता है घी लेने की वजह से, सो एंड सो। बट ऐसा कोई रेफरेंस या ऐसा कुछ नहीं है कि घी खाने की वजह से वेट गेन होता है। सो without hesitation you can use Drut Kalpana in this case, and you should see, like as per my experience it will take time in this case because I think ये प्यूबर्टी है तो शायद उसमें बीज दृष्टि की वजह से पीसीओडी हो सकता है। सो इसमें आपको रिजल्ट तो अचीव होगा बट आप सिर्फ मेंटेन कर पाओगे। जैसे ही मेडिसिन बंद करोगे तो शायद इम्पेयरमेंट आ सकता है वापस। ओके मैम। कुछ डोसेस के बारे में पूछा है किसी मैडम ने, डॉक्टर सपना जी ने, कि शतावरी चूर्ण का गोक्षु चूर्ण का रेशो एंड चित्रकादिवटी कितने दिन देना होगा? हाँ, चित्रकादिवटी जो हम दीपन पाचन के लिए अगर आप यूज कर रहे हो चित्रकादिवटी, तो वो 3 days या 5 days मैक्सिमम। अगर आप इंड्यूस करने के लिए यूज कर रहे हो तो मैक्सिमम हम लोग 7 days तक वेट करते हैं, उससे ज्यादा नहीं देते। बिकॉज अगर इंड्यूस होना है, अगर इफेक्ट आनी है तो 7-8 days में आ जाती है इफेक्ट। अगर नहीं आती दैट मीन्स की देयर इज अ मेजर प्रॉब्लम विथ धातु एंड उपधातु एंड दोषास, तो फिर उसमें बाद में हम लोग उसे शोधन ही प्लान कर देते हैं। एंड नेक्स्ट एक केस दी है डॉक्टर अंजू ने कि ट्रीटमेंट का थोड़ा लाभ तो हुआ है स्कैंटी मेंसेस के साथ, बट आगे क्या करना होगा? कुबेराक्ष स्मेदोपाचक वरुणादि कष्ट। ओके, सो स्कैंटी मेंसेस है, अगर उसे मेंस्ट्रुएशन रेगुलर है, स्कैंटी है, और आग्नेय ड्रग्स आप दे सकते हो फर्स्ट ऑफ ऑल। और आग्नेय ड्रग्स देने से पहले ये आप एक बार चेक कर लेना कि पेशेंट का HB जो है वो नॉर्मल है कि नहीं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम लोग ये सोचते हैं कि आग्नेय ड्रग्स देके हम मेंस्ट्रुएशन इंप्रूव कर सकते हैं, बट कई बार लो HB होने की वजह से भी वॉल नहीं प्रॉपर बनती और उससे भी स्कैंटी मेंसेस होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो एक चीज आप रूल आउट कर लेना। एंड आग्नेय देने के बाद भी अगर इम्प्रूवमेंट प्रॉपर नहीं है तो फिर आपको ब्रूमहण लाइन ऑफ ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी इसमें टू इम्प्रूव दी। एंड ब्रूमहण से भी ज्यादा कषाय ड्रग्स, कषाय रस ड्रग जैसे कि उदुम्बर अवलेह आप यूज कर सकते हो, या पंचवल्कल क्वाथ भी आप ओरली दे सकते हो, या ओनली उदुम्बर क्वाथ ऑल्सो वी कैन एडवाइस ओरली टू द पेशेंट। ओके मैम, ओके।
और कुछ सवाल हो तो, पेशेंट ओबेज है, ओके। और कुछ सवाल हो तो डायरेक्ट पूछिएगा। हेलो। हाँ हाँ, यस। हाँ मैम, थोड़ा बीच में एक पेशेंट था, आप क्या कह रहे थे? नहीं, मैंने कहा कि ये पेशेंट ओबेज भी है, शायद मैडम ने डाला है जो केस डिस्कस कर रहे थे ना, तो हाँ, तो ओबेस ओबेस पेशेंट है तो आप सिर्फ कषाय रस की औषधियाँ है जो यूज कर सकते हो, जिससे वॉल जो है वो भी फॉर्म होगी एंड मेंसेस जो है जो स्कैंटी है, अगर उसे रेगुलर मेंसेस है और स्कैंटी है तो, अगर इरेगुलरिटी है तो उसमें प्योरली लाइक आर्तोक्षय लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ही हमें फॉलो करनी पड़ेगी। सो कई बार क्या होता है कि हम सिर्फ 100% कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकते, कुछ पेशेंट में ड्रॉ हो जाता है, कुछ पेशेंट में कंफ्यूजन रह जाता है कि वेदर आग्नेय धातु की प्रॉब्लम है या नरिशमेंट की जरूरत है। सो ऐसे केसेस में हमें तो लाइक वो कहते हैं ना लाइक नेगेटिव पॉजिटिव ट्रीटमेंट करके देखना पड़ता है। एज हियर पेशेंट इज ओबेस, सो यू कैन ट्राई कषाय रस ऑल्सो along with Agneya drugs. Definitely within 2 or 3 months you will get your result. ओके मैम, यस। बताइए, पूछिए डॉक्टर्स, और कुछ है? आशा जी हेलो। और एनीवन एल्स? डायरेक्ट पूछिए आप अनम्यूट करके। हेलो। हेलो। थैंक यू मैम फॉर सच वंडरफुल सेशन। मुझे कुछ क्वेश्चंस पूछने थे। श्योर। मैम ये जो आपने हाँ हाँ, कंटिन्यू करिए सपना जी। हाँ मैम, ये जो शतावरी चूर्ण और गोक्षु चूर्ण दिया है तो ये दोनों का कंबाइंड 5 ग्राम्स है या दोनों को सेपरेटली लिया है? नो नो नो, कंबाइंड 5 grams है तो मैम एक्चुअली, 2 टाइम है। यस। दोनों को 2.5 ग्राम्स ईच ले लेंगे? हाँ, नो ऐसे एग्जैक्टली नहीं है, शतावरी 3 ग्राम है एंड गोक्षुर जो है वो 2 ग्राम है, तो ऑलमोस्ट वो इक्वल ही हो जाता है। लाइक प्रैक्टिकली हम लोग देखते हैं तो हम हमारे यहाँ पे क्या है कि वो मेजर करके देते हैं, तो परफेक्टली 2.5 ऐसे मेजरमेंट नहीं हो पाता, तो इसलिए होल इन होल 3+2 हम लोग करते हैं। एंड चूर्णा का जो डोज है, क्लासिकल डोज, वो 12 ग्राम बताया गया है, तो इस हिसाब से अराउंड 10 ग्राम जितना पर डे हम एडवाइस कर सकते हो, तो उतना इफेक्ट गेन करने के लिए इनफ है उतना। ओके। और मैम जो आपने केसेस में रज प्रवर्तनी वटी आपने बताया कि आपने दिया है, तो वो कंटिन्यूअसली दिया है या फिर सिर्फ पीरियड्स आने तक दिया है? रज प्रवर्तिनी वाली? हाँ, आपने केस 2 और केस 3 में आई थिंक नहीं, बोला वो है कि कंटिन्यूअसली मैंने यूज किया है। तो मैम वो कब तक दे सकते हैं? रज प्रवर्तिनी वटी जो है एज वो रसौषधि है, इसलिए हम उसे ऐसा कोई लिमिटेशन स्पेसिफिक नहीं है कि आप इतने साल तक नहीं दे सकते, ये नहीं कर सकते, हमें उसमें गैप रखना चाहिए। सो जब भी मेंस्ट्रुएशन होता है तब हम लोग ये मेडिसिन स्टॉप करवाते हैं, उसके बाद हम ये कंटिन्यू करवाते हैं। एंड मैक्सिमम टाइम पीरियड जो अब तक मैंने मेरे पेशेंट्स में दी है रज प्रवर्तिनी वटी, वो अराउंड 1 year 3 month या 1 year 6 month जितनी मैंने कंटिन्यू रज प्रवर्तिनी वटी दी है, तो वहां तक आप प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड यूजुअली 6, ये जो भी आप ट्रीटमेंट देते हो रज प्रवर्तिनी वटी या कोई भी, एंड अगर आपकी ट्रीटमेंट परफेक्ट संप्राप्ति के अनुरूप है तो विद इन 3 month और 3 to 6 month यू विल अचीव योर रिजल्ट, so you can use up to that period. तो मैम जब पेशेंट को मेंसेस आएंगे लाइक 5 डेज के लिए 7 डेज के लिए, हम उतने दिन के लिए स्टॉप कर देंगे, फिर वापस से स्टार्ट कर सकते हैं? हाँ। और मैम जो आपने पेशेंट्स में विरेचन और बस्ती दिया है तो वो थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। विरेचन में घृतपान किससे कराया है और बस्ती में किससे दिया है, मीन्स अनुवासन और निरो? स्नेहपान हमारा फिक्स है कि अगर ओबेस पेशेंट है तो कांचनर ग्रुथ हम यूज करते हैं, एंड लीन पेशेंट है तो हम लोग फल ग्रुथ से स्नेहपान करवाते हैं। एंड विरेचन औषधि जो है वो डिपेंडिंग ऑन प्रकृति एंड कैपेसिटी ऑफ पेशेंट, बहुत सारे विरेचन कल्प है, त्रिभूत अवले है, देन दीनदयाल चूर्ण है जो हम यहाँ लोकली यूज करते हैं, और हमारे खुद के कुछ प्रिपरेशन है, कुछ कॉम्बिनेशन करके हम लोग यूज करते हैं। एंड बस्ती में जो निरू बस्ती है उसमें मेनली ज्यादातर हम लोग दशमूल सबसे ज्यादा यूज करते हैं,
और लेखन बस्ती अगर देनी पड़े तो उसमें हम वरुण आदि क्वाथ यूज करते हैं। एंड फॉर लेखन पर्पस गौमूत्र जो है वो हम लोग बहुत ही सोच समझ के यूज करते हैं, उसकी क्वांटिटी एंड बहुत ही ऑब्जर्वेशन करके कि पेशेंट को कोई साइड इफेक्ट या वैसा कुछ ना हो रहा हो, कंटिन्यूअस ऑब्जर्वेशन में। तो वैसे हम लोग लेखन बस्ती यूज करते हैं। क्षार भी कभी कभी ऐड किया जाता है लेखन बस्ती में, बट हम लोग यहाँ पे यूज नहीं करते, बट इफ यू वांट यू कैन यूज दैट ऑल्सो। एंड अनुवासन बस्ती और तेल बस्ती में हम लोग नारायण तेल है, प्लेन तिल तेल है, वो यूज करते हैं। एंड कभी समटाइम इनफर्टिलिटी पेशेंट में हम लोगों ने फलग्रुत से भी अनुवासन बस्ती दी है, उसमें भी हमें काफी अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। ओके मैम। मैम एक लास्ट क्वेश्चन, लहसुन आदि वटी की डोजिंग और कितने डेज तक, मीन्स उसको कहाँ पे यूज करने के ज्यादा बेटर रिजल्ट होंगे, लीन पीसीओडी में या ओबेस पीसीओडी में? लहसुन आदि जो उसका ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है कि लीन और ओबेस, आप उसे कोई भी केस में यूज कर सकते हो। और एक्चुअली वो पूरी हर्बल प्रिपरेशन है, तो डिपेंडिंग ऑन पेशेंट कैपेसिटी यू कैन एडवाइज लहसुन। तो लाइक मैक्सिमम डोज जो है वो 3 टैबलेट्स ट्वाइस अ डे और थ्राइस अ डे यू कैन एडवाइज टू पेशेंट। एंड लहसुन नादी वटी में तभी यूज करती हूँ जब पेशेंट्स को रेगुलर डाइट में वो लोग गार्लिक नहीं ले पाते हैं, मतलब टेस्ट की वजह से या स्मेल की वजह से, या कुछ लोगों की लाइक कस्टम में होता है कि वो लोग गार्लिक नहीं खाते। अदरवाइज मैं प्लेन गार्लिक ही ज्यादा प्रेफर करती हूँ पेशेंट को डाइट में लेने की वजह से, क्योंकि उसके रिजल्ट्स ज्यादा अच्छे आते हैं कंपेयर टू दैट ऑफ टेबलेट। मेनली लहसुन आदि वटी जो है वो वात व्याधि की ओर हमारा ज्यादा उसका वो रहता है झुकाव, बट कुछ पर्टिकुलर केस में ही हम लोग लहसुन आदि वटी यूज कर सकते हैं। मैक्सिमम आप 6 to 10 टैबलेट्स इजीली आप एडवाइस कर सकते हो पेशेंट को। ओके ओके, थैंक यू। हेलो हेलो हेलो। हेलो। हाँ मैम, अभी एक पीसीओडी कम्युनिकेशन का पूछा था 16 ईयर गर्ल का, उसमें आपने बताया वरुणादि कषाय, पुनर्नवादि क्वाथ, त्रिफला गुड़ और फलगुत, राइट? तो थोड़ा अग्निमांद्य की वजह से फलगुत दे सकते हैं क्या? अग्निमांद्य भी अग्निमांद्य, और अगर ऐसा लाइक आप वरुण आदि क्वाथ भी दे रहे हो, फिर इवन फलगुत के भी अगर आप कंटेंट्स देखोगे तो उसमें भी उष्ण वीर्य ड्रग्स है, तो जिसकी वजह, और इवन घी जो है वो अग्निदीपक है, शायद आपको पता होगा कि गोघृत की जो इफेक्ट है वो अग्निदीपक होती है। तो मुझे नहीं लगता कि अग्निमांद्य में हम घी देंगे तो अग्नि और मांद्य होगी। हम डोसेस क्या देने हैं? वरुणादि कषाय, पुनर्क्वाथ, डोसेस वरुणादि कषाय, हाँ, वरुण आदि कषाय का जो डोसेज है वो यूजुअली कषाय डोसेज क्लासिकल 1 पल लिखा है 48 ml, तो होल डे में हम उतना डिवाइड करके देखे तो 20 ml इन मॉर्निंग एंड 20 ml इन नाइट, ऐसे आप एडवाइस कर सकते हो। बट आप अगर पेशेंट की कैपेसिटी है तो इवन 20 ml दिन में 3 टाइम भी आप एडवाइस कर सकते हो मैक्सिमम, बट एटलीस्ट 20 इन मॉर्निंग एंड 20 इन नाइट, तो उतना मिनिमम तो देना ही है। और पुनर्नवादि क्वाथ, त्रिफला गुड़ सेम उनकी डोसेज भी उतनी ही रहेगी। हाँ, अगर आप दोनों एडवाइस कर रहे हो वरुण आदि एंड पुनर्नवादि, तो दोनों का मिला के 20-20 होना चाहिए। ओके ओके। ऐसा नहीं कि ये भी 40 दे दिया पूरा दिन में और ये भी 40 दे दिया, तो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, इसलिए जितनी भी कषाय दे रहे हो टोटल कषाय की क्वांटिटी मिला के 40 to 60 होनी चाहिए पर डे। और त्रिफला गुड़ 2 बीडीएस। हाँ, त्रिफला गुगड़ जो है वो एक्चुअली उसमें भी ब्रांड पे डिपेंड करता है। हम जो प्रिपेयर करते हैं उसका डोज तो हमने 3 टैबलेट मिनिमम जो है 3 टैबलेट ट्वाइस अ डे से लेके 3 टैबलेट 4 टाइम पर डे रखा हुआ है। जैसे दूध पापेश्वर वगैरह कंपनी की जो गूगल आती है तो उसको आप 2 टैबलेट 3 टाइम अ डे भी एडवाइस कर सकते हो। ओके। और फलगुरुत 10 ml बीडी। हाँ, फलग्रुत 10 ml, क्योंकि वो घी है तो शमन जो मात्रा है, शमन घृत की मात्रा वो 10 to 15 ml रहती है यूजुअली। तो या तो आप एक साथ 10 to 15 ml दे दीजिए, या तो डिवाइड करके, मतलब 5 ml इन द मॉर्निंग 5 ml इन नाइट, ऐसे भी दे सकते हैं। ओके, थैंक यू थैंक यू। हमें एक केस डाली हुई है डॉक्टर आशा जी ने, थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालेंगे। लाइक उन्होंने कुछ ट्रीटमेंट भी दिया है और आगे कुछ शायद अभी कंडू है। आशा जी बोलिए।
हाँ, जी, ये good inbox evening, में ma'am. गुड इवनिंग। One of my patient that is 44 years old, ma'am. She is 42 kg of weight. और उन्होंने ना क्या किया था कि पीसीओडी उनको 4 to 5 years से था, लेकिन फिर खुद से ही ट्रीटमेंट लिया, कुछ अल्टरनेटिव मेडिसिन लिया वैसे करके ड्यूरिंग दैट कोरोना पीरियड। और उनके बाद उनको सर्वांगकंडू हो गया एंड शी आल्सो डेवलप सम फाइब्रॉइड्स आल्सो। तो जब मेरे पास पेशेंट आया था देन शी हैज पीसीओडी तो कंटिन्यू ही था, लेकिन शी वाज एनीमिक आल्सो। सो आई ट्रीटेड हर फॉर पर्टिकुलरली एनीमिया। अब पीसीओडी में तो यही रहेगा, 2-3 दिन का ही उनका स्कैंटी पीरियड था, तो उससे उनका एनीमिया वगैरह तो ठीक हो गया, पीसीओडी में भी काफी रिलीफ आया। बट नाउ द मेजर कंप्लेंट इज वेट लॉस एंड सर्वांगकंडू। तो उसमें क्या कर सकते हैं, क्योंकि आई थिंक पीसीओडी के लिए तो मैंने उनको शतावरी घृत और विरेचन कराया था, अभ्यारिष्ट फलघृत वगैरह दिया था एज पर लीन पेशेंट। तो सर मैम अब इसमें और आगे क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं केशोर गुगुलू गंधक रसायन वगैरह सब दे चुकी हूँ, बट पेशेंट का अग्निमांद्य अभी भी थोड़ा रहता है। तो अभी पेशेंट को पीसीओडी ट्रीट हो गया है ना, लाइक अभी पीसीओडी की कोई कंप्लेंट नहीं है? नाउ शी इज गोइंग टू दैट मेनोपॉज एज, मुझे ऐसे लग रहा है, क्योंकि आफ्टर दैट 2-3 cycles she is complaining of scanty period of 2-3 days only. हाँ, तो पेरीमेनोपॉजल पीरियड मान सकते हैं इसे। Yes. ओके, अभी उसको कंप्लेन में अग्निमांद्य मींस कोई ऐसी कोई कंप्लेन है पेशेंट की? ये अरुचि, भूख नहीं लगना और वेट लॉस काफी हो रहा है मैम। ओके, तो वेट लॉस के लिए उसका रीजन जानना जरूरी है। लाइक पेशेंट की डाइट कम हुई है या पेशेंट की फिजिकल एक्टिविटी बढ़ गई है फर्स्ट ऑफ ऑल, या तो सिस्टमिक कोई इन्वॉल्वमेंट है। अगर मान लो डाइट कम हुई है अग्निमांद्य की वजह से, तो उसके लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अभी ये जो पीरियड है इसमें पित्त थोड़ा इम्पेयर्ड रहता है, तो ओनली प्लेन चित्रकादि तो एडवाइस नहीं कर सकते, बट जैसे कुष्मांड रसायन है, एक मेडिसिन है, तो कुष्मांड रसायन में सिर्फ कुष्मांड होता है और बाकी सारे प्रक्षेपक द्रव्य होते हैं, जो मसाले जितने भी हैं तीक्ष्ण उष्ण रहते हैं, तो उससे क्या उनकी अग्निदीपन भी होगा और ब्रूमण भी होगा, तो जिसकी वजह से वेट जो है वो बैलेंस में आ सकता है। देन शतावरी यू कैन एडवाइस, जो शायद आपने ऑलरेडी एडवाइस किया हुआ है पहले किया था। हाँ, देन पेरीमेनोपॉजल है तो रसायन कल्पवटी का एक कॉम्बिनेशन है, वो भी आप एडवाइस कर सकते हो पेशेंट को। एंड लाइक ये जब भी आप ये मेडिसिन दोगे, ये जो कुष्मांड रसायन है, तो उससे ऑलरेडी उनकी जो हंगर है वो इम्प्रूव होगी। या सिर्फ प्लेन घी, जो गाय का घी होता है, वो प्लेन भी आप लेने के लिए कह सकते हो, उससे भी बहुत अच्छे से अग्निदीप्ति होता है और पेशेंट को भूख भी अच्छे से लगती है। ये सारे बेसिक उसके उपाय है। अगर इससे भी पेशेंट को ज्यादा इम्प्रूवमेंट या ज्यादा वो नहीं हो रहा है, तो फिर उनको दीपन पाचन करके, अगर ये विरेचन वगैरह देके, कितना टाइम हुआ है? मैम सिंस 6 months शी इज टेकिंग ट्रीटमेंट फ्रॉम मी, और शुरू में तो ठीक हो भी गया था, दीपन पाचन वगैरह सब कराया था उनको, आम पाचन वटी और शतावरी घृत से विरेचन भी कराया था स्नेहल पूर्वक त्रिवृत देके। बट द कंसर्न इज कि उनको ईचिंग थोड़े थोड़े महीने पे कंटिन्यू हो जाती है, तो इसका क्या रीजन है मुझे कुछ ऐसा समझ में नहीं आया पर्टिकुलरली। फिर मैंने उनको गंधक रसायन स्टार्ट करवाया, विडंगारिष्ट भी दिया कि चलो कृमि हो सकता है करके। हाँ, ईचिंग की प्रॉब्लम है, शी इज बेसिकली वात पित्तज प्रकृति, तो उनको ड्राइनेस बहुत है स्किन में। ओके, जस्ट 1 मिनट। हेलो, हाँ हाँ, ठंडू ठंडू नहीं लगती। हाँ, see in this vaginal itching है, right? No, not vaginal, सर्वांगकंडू। सर्वांग, होल बॉडी। ओके, सो होल बॉडी इचिंग है, तो उसमें आपने कोई इन्वेस्टिगेशंस या कुछ कराया है रूल आउट के लिए? लाइक ब्लड पैरामीटर सारे नॉर्मल है मैम, जस्ट थोड़ा एनीमिया कभी कभी बीच बीच में आ जाता है, अदरवाइज शी इज कंप्लीटली ओके। मुझे थोड़ा लीवर फंक्शनिंग थोड़ा डाउन लगा था बीच में। हाँ, तो उनकी लीवर पैथोलॉजी जो रिपीटेड इचिंग होती है, उसमें एक तो एलर्जी होती है फर्स्ट ऑफ ऑल, जो हमारा डाउट जाता है, बाद में हम लीवर के बारे में सोचते हैं। जी, नहीं एलर्जी वगैरह तो कुछ है नहीं उनको। ओके, कोई पर्टिकुलर चीज से, कपड़े से या ऐसा कुछ नहीं है पेशेंट? मैंने उनका साबुन वगैरह भी बंद करा दिया कि भाई शायद साबुन की वजह से हो सकता हो करके। ये तो फिर उनको ड्राइनेस की वजह से भी हो सकती है, लाइक स्किन बहुत ही ड्राई होती है जिसकी वजह से इचिंग
हो सकते हो। उसके लिए आप ये बेस्ट ऑप्शन है, शमन घृत पान करवा सकते हो। या तो आप शतावरी घृत दे रहे हो तो शतावरी घृत कंटिन्यू रखिए, या तो ओनली गो घृत भी आप एडवाइस कर सकते हो। एंड कुष्मन रसायन आप ऐड कीजिए आपके प्रोटोकॉल में, उससे आपकी जो मांद्य की और वेटलेस की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। जैसे ही घी स्नेहन होगा बॉडी में और जो रुक्षता कम होगी, अब जी। अगर लीवर फंक्शन एंड बाकी सब चीजें नॉर्मल है तो उनको ये इचिंग की प्रॉब्लम भी धीरे धीरे कम हो जाएगी। ओके, ठीक है मैम, कुष्मा डोले में ऐड करके दो। थैंक यू मैम। Any more questions? So in Any more questions? Okay. तो usually में आप फार्मेसी का लगता है, पर यहाँ से इम्पोर्ट नहीं होता है, तो लिए आप टिपिकल फार्मा का फल यूज कर सकते हो। एंड ट्रीटमेंट फॉर एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेशिया, सो इन दैट विरेचन एंड बस्तिकर्मा एंड लेखन औषध। अगर इसमें कंटिन्यूस करना है, अगर 3 मंथ में कोई रिजल्ट नहीं मिलता है और हाइपरप्लेशिया बढ़ता जाता है, तो आपको उसमें होलिस्टिक अप्रोच थ्रू एलोपैथी इन्वॉल्वमेंट ऑल्सो आपको उसमें चाहिए होगा। हाइपरप्लेशिया में सिर्फ आयुर्वेदा में आप रिस्क नहीं ले। So I think आपके सारे सवालों के जवाब भी मैडम ने अच्छे से दे दिए हैं। एंड इफ नो मोर क्वेश्चंस यू मे, आर देयर एनी क्वेश्चंस? ओके, सो थैंक यू डॉक्टर वैशाली मैम, थैंक यू फॉर योर काइंड कोऑपरेशन। एंड अच्छा रहा सेशन आज का, काफी कुछ सीखने को भी मिला आपसे। एंड मैं आयुष दर्पण की तरफ से आपका आभार व्यक्त करती हूँ। थैंक यू मैम, एंड थैंक यू ऑल द वैद्यार्स। थैंक यू वेरी मच। चलिए फिर, ओके मैम, नमस्ते डॉक्टर वैशाली, थैंक यू।